Okay, so this is complex analysis lecture number 6. लास्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. सो पुट द हेडिंग कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन. A function f of z is said to be continuous at z is equal to z naught if limit f of z when z tends to z naught should be equal to f of z naught. Further, if f of z is said to be continuous in any region R of the z plane if it is continuous at every point of the region R. जैसे किसी पॉइंट z0 पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे कंटिन्यूस है या नहीं, आप ये वाला कंडीशन लगा सकते हो, और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटिन्यूस है. लेट्स से आई हैव सम रीजन R और मुझे चेक करना है कि इस पूरे रीजन R में ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. तो इस रीजन R के हर पॉइंट पे, ऑब्वियसली देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो हर पॉइंट पे हम अगर वो कंटिन्यूस होगा तब हम बोलेंगे कि पूरे रीजन में द कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज कंटिन्यूस. टेकिंग एग्जांपल, क्वेश्चन लिखिए, इज f of z equals to z by mod z when z is not equal to 0, 0 when z equals to 0, continuous at origin, continuous at origin. So tell me, comparing, seeing the question, what is the value of z naught here? At what point you are testing the continuity? What is the value of z naught? Zero. So let us solve this. So if I'm interested to find, if I'm want to make this function continuous at z equals to 0, so the condition for continuity should be limit f of z when z tends to 0 should be equal to f of 0. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तब हम बोलेंगे कि 0 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है. Okay, so I will write the function f of z will be continuous at origin if limit f of z when z tends to 0 equals to f of 0. यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला कि f of 0 is 0. It's given in the question. So now limit f of z when z tends to 0 equals to limit f of z के बदले
z by mod z when z tends to 0 equals to लिमिट z को क्या लिख सकते हैं x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय मॉड z को क्या लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z टेंड्स टू 0 कहने का मतलब एक्स वाई बोथ शुड टेंड टू 0 तभी हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ओके सो लिमिट x प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x कॉमा वाई टेंड्स टू 0 अब लेट z टेंड्स टू 0 along the path कोई भी एक रैंडम पाथ लेट्स से y इक्वल्स टू mx when x tends to 0 ओके यहां तक नोट करो सर नोट डाउन फास्ट हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे Done. So here I am assuming that let z is tending to 0 along some random path y equals to mx when x is tending to 0. So substitute this limit f of z when z tends to 0 equals to limit x plus I mx divided by root under x square plus m square x square when x tends to 0 equals to limit x 1 plus im divided by x root under 1 plus m square when x tends to 0. So the value of the limit here is 1 plus im by root under 1 plus m square. Can you tell me, is the limit value unique? No. So if the limit value is itself not unique, so does it mean that limit exists? No. So you can write here, since for different values of m, we have different values of limit, which means the limit is not unique. The limit is not unique, hence limit does not exist. Now, if limit itself is not existing, is there any question of being continuous? No, not at all. So limit ही exist नहीं कर रहा है तो काहे का continuous? तो आप बता सकते हो, hence f of z is not continuous at origin. So this is your complete answer. Second question बनाइए तो आप लोग. I want solutions from everyone. Let f of z equals to z bar का cube when z is not equal to 0 and 0 and
0 when z equals to 0. Show that f of z is continuous everywhere on C. F of z is continuous everywhere on C. Time limit, I'm giving you 3 minutes. Drop the solutions in your WhatsApp group. I'll be seeing your solutions. Then I will solve it. सिर्फ एक लोग सॉल्यूशन डालें, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? I have received only one solution of Astha. What others are doing? Ananta, Komal, Kripanshu, Kuldeep, Kunal, Lakhan, Malika, Manvendra, Muskan,
नचिकेत, नंदिनी, रोशनी, सिद्धि, तन्नु, तापस, तारिक. Please solve. Okay, देखिए यहाँ पे. Can you tell me what is this? ये क्या है? What is C? Set of complex numbers. Okay. तो ये तो बहुत आसान था आप लोग के लिए. Simply you need to put y equals to mx और उस पे आप easily डाल सकते हो. I'm twisting the question and making you a little bit by z square. अब बनाइए तो. Z बार क्यूब सब बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था क्योंकि जरूरत ही नहीं था उसमें. Z बार क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर, तो बनाओ. अच्छा, you tell me z bar cube and z square. Are these continuous? देखो, हम लिख सकते हैं since z bar cube and z square are continuous on a region C equals to 0 को छोड़ करके देखो. सपोज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उससे आप 0 को गायब कर दीजिए. 0 को अगर हम गायब कर देते हैं तो we can say that z bar cube and z square are continuous on this region at least, provided z square is not equal to 0. Okay, now we want to check whether this function, that is the fraction z bar cube upon z square, this is continuous everywhere or not, or rather this whole function is continuous on the region C. Okay, so I have taken a separate region which is C dash, excluding this 0. Okay, the rest part we will solve it by putting y equals to mx. So if that is so definitely f of z, which is z bar cube upon z square, is continuous on C dash. Is this statement correct? Forget about C, focus on C dash, in which I have excluded 0. So at least we are sure that f of z is continuous on the region C dash. But we have to prove that f of z should be continuous on C, including 0 also. So we will take up this z equal to 0 separately. First, you tell me whatever the statement that I have written here, is this correct? Do you agree with me? Okay. Now let's see what happens at z equals to 0. Right? At z equals to 0, we have limit f of z when z tends to 0 equals to
limit z bar cube by z square z tends to 0 equals to limit x minus iy cube divided by x plus iy square when your x and y both are tending to 0. So again, let us consider that let z equals to 0 along the path y equals to mx when x tends to 0. So therefore, limit f of z when z tends to 0 equals to limit z bar cube upon z square when z tends to 0 equals to limit x minus imx whole cube upon x plus imx whole square when x tends to 0. यहाँ से कॉमन ले लो, x क्यूब कॉमन आएगा 1 माइनस imx का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1 प्लस imx का होल स्क्वायर x tends to 0. x, what is the value for this? Question में दिया हुआ है z square लखन. I have modified it, the question. So this is 0. So what can you conclude? Is the limit unique here? So if the limit is unique, that means the limit is existing. And if the limit is existing, we need to check whether that limit value is making equal to f of 0 or not. So you can say, hence the limit is unique. Hence the limit is unique. Also, f of 0 equals to 0. So this implies limit f of z when z tends to 0 equals to f of 0. So hence f of z is continuous everywhere on C. So you should be well aware कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपको बोला है कि चेक करिए कि हर जगह कंटिन्यूअस है या नहीं. तो आप उस क्या करो, उस रीजन को तोड़ दीजिए. सपोज दिस इज द रीजन एंड देयर वाज सम पॉइंट, लेट्स से 0. एक पॉइंट था दैट इज z equals to 0. So we divided into two sections. In section number 1, this is the region, the green part. This was the first section. And this is the purple section. So let's say this is section 2. So I have section 1, I have section 2. Now in section 1, we already showed that it is continuous. Okay. Now the only challenge part was what happens at z equals to 0. So this was absolutely sure. There was no doubt in checking the continuity at this point. Okay, that is z not equal to 0. Only doubt was what happens at z equals to 0. So in order to do that, we have taken all these steps, y equals to mx, and we also showed that yes, at z not equal to 0, this is continuous, z equal to 0, it's also continuous. So adding these and 2, so that means it is continuous everywhere in the complex region C. Then only you'll get full marks. Otherwise, simply if you will do y equals to mx आप दिखा दो तो number कट जाएंगे आप. Are you getting my point? How the previous question was different from this one? Okay. So just see this previous slide. If anyone has missed out, take the snapshot. This is another one. आगे बढ़े? Shall we proceed further?
Great. Good heading. Differentiability. Differentiability of a complex function. A function f of z is said to be differentiable at z equals to z naught if f dash z naught equals to limit f of z minus f of z naught by z minus z naught, z tending to z naught exists. The limit f dash z naught is known as the derivative of f of z at z equals to z naught. The above limit should be same along any path from z to z naught. So based upon that, write the question. Show that f of z equals to real z is continuous but not differentiable. आपको दिखाना है कि रियल z is continuous but not differentiable. Okay, तो एक आसान है, ये बनाते हैं. We know that the function f of z is continuous at any point z equals to z naught if limit f of z when z tends to z naught equal to क्या? इसके बराबर होना चाहिए, बोलो. अगर f of z को कंटिन्यूअस शो करना है तो इस लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? f of z naught. Good. So this should be f of z naught. Okay. Now here, what is the function? What do you mean by real z? Real z का मतलब x. Good. So limit f of z tends to z naught equal to क्या करें? लिमिट x z tends to z naught. अगर z x प्लस iy होता है तो z naught क्या होता है?
आपको नहीं लगता एक्स जेड नॉट इज नथिंग बट एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट? ओके, तो हियर z टेंड्स टू z नॉट, सो इसका मतलब x y वाले पार्ट को मैं भगा दे रहा हूँ, सो x शुड टेंड टू x नॉट एंड दिस लिमिट वैल्यू शुड बी इक्वल टू x। ये लाइन क्लियर है सबको? अब देखो ये किसके बराबर होना चाहिए, f ऑफ z नॉट के बराबर होना चाहिए। तो इफ f of z equals to x, then definitely f of z naught should be equal to x naught. So which is obviously making these two things equal. So therefore I can write limit f of z when z tends to z naught equals to f of z naught. Hence f of z is continuous at z equals to z naught. So continuous everywhere. ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑब्वियसली x है तो वहां पे x में ही है। अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट रहता देन वी कुड हैव प्रोसीडेड इन अ मैनर दैट बाय कंसीडरिंग y इक्वल्स टू mx एंड फलाना एंड गोस, लेकिन सिर्फ x पार्ट ही है, सो वी कैन कंक्लूड हियर आल्सो दैट दिस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। मूविंग टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज चेकिंग द डिफरेंशिएबिलिटी। यहां तक लिख लिया सबने? Okay. So let z tends to z naught along any path, कोई भी random path आप consider करो। Therefore, f dash z का definition we know that it is limit f of z minus f of z naught by z minus z naught, z tends to z naught equals to limit x minus x naught by x plus iy minus x naught plus iy naught, x tends to x naught, y tends to y naught. Limit, अब देखो x tends to x naught, तो x naught minus x naught divided by x naught plus iy naught minus x naught plus iy naught, y tends to y naught। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। बट f of z equals to limit f of z minus f of z naught by z minus z naught, z tends to z naught equals to limit x minus x naught upon x plus iy minus x naught plus iy naught, x tends to x naught, y tends to y naught equals to अब इसको क्या करो, x minus x naught divided by x plus iy naught, x naught plus iy naught x naught plus I
फर्स्ट लाइन में लास्ट एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, अच्छा अच्छा रुको रुको, यहाँ पे एक एक चीज, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, एक सेकंड। यहाँ पे हमने कंसिडर किया लेट z टेंड्स टू z नॉट अलोंग एनी पाथ। ठीक है, अब देखो ये यूनिक नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, पहले हम एक बार x टेंड्स टू x नॉट डालेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, फिर y टेंड्स टू y नॉट डालेंगे, उसके बाद फिर x टेंड्स टू x नॉट डालेंगे। ऑर्डर देखो यहाँ पे, y टेंड्स टू y नॉट, x टेंड्स टू x नॉट। ऊपर वाले में सबसे पहले x के जगह पे x को टेंड कराओ पहले x नॉट को, उसके बाद फिर y टेंड्स टू टेंड कराओ y नॉट को। तो अगर हम इसको टेंड कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं, x नॉट, ये देखो सिर्फ x को डाल रहे हैं पहले, x नॉट माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय x नॉट प्लस आई वाई माइनस x नॉट प्लस आई वाई नॉट, y टेंड्स टू y नॉट। ये सॉल्व करके फिर हम इसको डालेंगे। पहले इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि न्यूमरेटर आपका जीरो हो जा रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज मेकिंग इक्वल टू जीरो। सो पहले वाले केस में, सो द लिमिट वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी जीरो। इन द सेकेंड केस फर्स्ट यू सब्स्टिट्यूट y टेंड्स टू y नॉट, so here limit x minus x naught divided by x plus I y naught minus x naught plus I y naught के बाद x टेंड्स टू x नॉट करो। ठीक, यहाँ पे कुछ भी तो कैंसिल, हाँ कैंसिल हो जाएगा, रुको, लिमिट x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x प्लस आई वाई नॉट माइनस एक्स नॉट माइनस आई वाई नॉट, ये कैंसिल हो गया, x टेंड्स टू x नॉट, इसको इधर रहने दो। तो यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट व्हेन x टेंड्स टू x नॉट, तो ये तो कैंसिल हो गया, बन गया वन। सो ऊपर वाले का आंसर आ रहा है जीरो, नीचे वाले का आंसर आ रहा है वन। हाउ, ऑर्डर बदल रहे हैं। एनी पाथ, आप सपोज कोई भी पाथ पे जा रहे हो, लेट्स से इफ आई एम मूविंग टू दिस पाथ, लेट्स से आई एम मूविंग टू दिस पाथ, so if I am moving to this path, then definitely it is having some coordinates। ठीक है ना, आपको यहाँ पे पहुंचना है, सीधा आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो आप दो तरीके से जा रहे हो। इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट यू आर ट्रैवलिंग बाय एक्स एंड देन यू आर मूविंग टुवर्ड्स वाई। समझ में आया, ये पहला है तरीका जब आप यहाँ पे पहुंच रहे हो। ठीक, दूसरा, if you want to reach at this point, the second way is you can go from in y axis first and then you travel in this x axis. So this is the second path or second way in which you are going. So if limit has to exist, or rather yes, so यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसमें जो वैल्यू मिल रही है, इसमें जो वैल्यू मिल रही है, बोथ आर नॉट यूनिक। तो अगर यूनिक ही नहीं है, इसका मतलब आप समझ ही रहे हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल अगर होना होता तो एफ डैश जेड की वैल्यू सेम आती, चाहे आप कोई भी पाथ से जाओ,
चाहे आप फर्स्ट x से जाओ फिर y से जाओ, या फिर आप फर्स्ट y से जाओ x से जाओ. So that is why you can write here, therefore f dash z is not unique. Therefore f dash z is not unique. Hence it is not differentiable. Now combining the first statement and second statement, I can conclude the final statement of the question, that is f of z equals to r real z is continuous but not differentiable. समझ में आया सबको? देखने में आसान लग रहा है, but only thing is simply you need to play with the words and do away with the things. Shall we proceed further? Please respond, everyone. Okay. Next, put the heading analytic function. This is actually the crux or a 5-star thing, because every year you will find a question related to this concept. So memorize this. A single valued function f of z which possesses a unique derivative at every point of a region R is called analytic function of z in R. It is also called the regular function or holomorphic function. So whether you call this analytic function or regular or holomorphic, it means the same thing. There are certain points that you should remember directly. First is the necessary and sufficient yes, one more is monogenic. Thank you. The necessary and sufficient condition for f of z equals to uxy plus ivxy to be analytic in a region R. Number 1, do u do x, do u do y, do v do x, do v do y are continuous function of x and y in R. Number 2, do u do x,
should be equal to do v do y and do u do y equals to minus do v do x. So these are called Cauchy-Riemann equations. Cauchy-Riemann equations. पहला point याद रखना. Second, the real and imaginary parts of an analytic function are called conjugate function. Conjugate function. यहाँ तक लिख लियो तो आगे बढ़ेंगे. बोल दो. Okay, third point लिखिए. A point where the function is not analytic is called a singular point. Fourth, Cauchy-Riemann equations in polar coordinates are do u by do r equals to 1 by r do v do theta. Do v do r equals to minus 1 by r do u do theta. Next पढ़ेंगे entire political science. Entire function. A function which is analytic everywhere for all z in the complex plane is known as entire function. Is known as entire function. अगर कोई function f of z is entire, अगर entire है, then it is analytic. अगर analytic है, तो definitely it is differentiable, and अगर differentiable, then it is continuous. So with a circle diagram, you can remember like this.
ये एंटायर फंक्शन, ये एनालिटिक डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस। नोट कर लिया आप लोगों ने? प्लीज के बेसिस पे क्वेश्चन लिखिए। डिस्कस द एनालिटिसिटी of the following functions। पहला, जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर का एनालिटिसिटी चेक करिए। एक मैं बना रहा हूं, बाकी फंक्शन दे रहे हैं तो उसको आप बनाइएगा। सॉल्यूशन, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, दिस implies u plus iv equals to x plus iy का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस iy का होल स्क्वायर प्लस 2xy i, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस i टाइम्स 2xy equating real and imaginary parts, u is x square minus y square and v is, v क्या होगा, i 2xy या सिर्फ 2xy? 2xy, so you have u, you have v, so apply CR equations। do u do x क्या होगा, 2x, do u do y minus 2y, do v do x 2y, do v do y 2x। तो आप लिख सकते हो सिंस all partial derivatives, all partial derivatives are continuous and CR equations are also satisfied, है ना? दिख रहा है आपको? do u do x is equal to do v do y and do u do y is minus do v do x, therefore f of z equals to z square is analytic function। सबको प्रोसेस समझ में आया? Have you all understood the process to check the analyticity? Okay,
Giving you a little tough question. Please solve it. Tell me whether f of z equals to sin z. चेक करके बताओ sin z एनालिटिक है या नहीं. F of z equals to e power z is analytic or not? Cos hz is analytic or not? 1 by z is analytic or not? ये रहा बैकस्लाइड. ये जो 4 फंक्शंस दिया सबको चेक करो और बताओ कौन एनालिटिक है कौन एनालिटिक नहीं है. I'm giving you some time. Please solve it and drop the solutions in group. बोलिए साइन जेड एनालिटिक है या नहीं. शांत काय हो जाते हैं आप लोग. आंसर दिया करिए. साइन जेड एनालिटिक.
Not able to solve. साइन जेड को यू भी में नहीं निकाल पा रहे हो? अरे कॉमन सेंस लगाइए। देखो यहाँ f of z equals to sin z. This implies u plus iv equals to sin x plus iy. अब sin a plus b फॉर्मूला भूल गए? sin x cos iy plus cos x sin iy. ठीक, u plus iv equals to sin x cos iy को क्या लिख सकते हैं? cos hy लिख सकते हैं। और i cos x sin hy। हाइपरबोलिक फंक्शंस, यहाँ पे ये याद रखो, cos iy equals to cos hy, sin iy equals to I sin hy। कैसे याद रखोगे? cos eats, sin vomits, cos खा जाता है, sin उगल देता है। देखो यहाँ पे cos ने i को खा लिया और cos hy बन गया। sin i को नहीं खा पाया, i को उगल दिया और sin hy। रिमेंबर दिस। अब आपके पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट है। सो दिस इज u, दिस इज v। अब और कुछ भी बताना है क्या? अब तो बता दो, एनालिटिक है या नहीं। अच्छा, डेरिवेटिव पता होगा हाइपरबोलिक का। d बाई डी थीटा ऑफ साइन एच थीटा क्या होता है? व्हाट इज d बाई डी थीटा ऑफ साइन एच थीटा? cos h थीटा। d बाई डी थीटा ऑफ cos h थीटा ये क्या होता है? sin h theta. So remember there is no negative sign in all these things in hyperbolic. Sin का cos, cos का sin। ठीक, ये दो चीज ध्यान दें इस पे, और इससे आप बना सकते हो एंड यू कैन कंक्लूड ये एनालिटिक। किसका किसका एनालिटिक आ गया? जिसका जिसका एनालिटिक आ गया अपना नाम लिख दो फटाफट। गुड, वेरी गुड। चलिए पैक काम करिए आप। अ, इसको होमवर्क में बना करके लेके आएगा। वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस tomorrow and we'll continue after solving. Okay, fine. Now you tell me, are you taking the mocks of prelims, those who are appearing this year?
या सिर्फ पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो? प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हैं आप लोग, डीएस का, सी सैट का, 200 नंबर वाला। नो वन? सी सैट भी दीजिए, डोंट टेक सी सैट लाइटली। हैबिट बना लो, सी सैट भी देना, जीएस भी देना, स्कोर हाई करना। एक स्टेज क्लियर करोगे तभी साल भर का मेहनत काम आएगा, वरना सब बेकार हो जाएंगे। डोंट लेट योर 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर और 2 ईयर, जितने साल से भी आप तैयारी कर रहे हो, डोंट गेट दैट गो इन वेन। पढ़ाओ, पार करना है वो सब चीज। ठीक है, चलिए तब आज यहीं पे रखते हैं। और आप लोग से वैसे थोड़ा आज टाइम नहीं मेरे पास, वरना आप लोग से बात करते। आई विल टेक सम सेशंस फ्रॉम टुमारो, वो जो मीटिंग सेशंस है, तो यू कैन कम टुमारो टॉक। सी यू एंड गुड नाइट, बाय।